Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Vishal. The top stories. Domestic share indices witness losses of more than 1%. Sensex finishes near the 60,200 level, while the Nifty settles below 17,900 points. At the forex market, the rupee appreciates 13 paise against the US dollar. And gold slips to trade near 56,800 rupees per 10 grams for February contracts delivery at the MCX. घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक का नुकसान दर्ज। सेंसेक्स 60,200 के स्तर के करीब हुआ बंद। निफ्टी 17,900 अंक से नीचे आया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती और एमसीएक्स पर फरवरी अनुबंध के सोने की कीमतें गिरकर 56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब। शुरुआत कार्यक्रम की सबसे पहले हम शेयर बाजार से करते हैं। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक का नुकसान दर्ज हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,200 के करीब बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.27% के नुकसान से 774 अंक गिरकर 60,205 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.25% की गिरावट से 226 अंक नीचे 17,892 पर आ गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.52% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.94% की गिरावट रही। Well, as Vishal just mentioned, the Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 1%. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended near the 60,200 points mark. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed below the 17,900 level. Both stocks slipped amid mixed global cues. The Sensex declined 778 points or 1.27% to finish at 60,205. The Nifty 50 also fell 226 points or 1.25% to settle at 17,892. In the broader market at the BSE, the mid-cap index plunged 1.52%, while the small-cap index ended 0.94%. In the Sensex pack, 7 companies posted gains while 23 witnessed losses. Hindustan Unilever was the top gainer as it rose 1.1%, followed by Maruti, which fell 1%. Tata Steel ended 0.5% down. On the other hand, SBI and IndusInd Bank both declined 4.3%, while HDFC Bank fell 2.8%. In sectoral indices at the BSE, all sectors fell except metals, which added 0.1%. Services and utilities lost 2.9% each, and power index fell 2.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,120 companies gained while 2,396 fell. Shares of 130 companies, however, remained unchanged. और अगर रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 59 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में मामूली बढ़त के साथ 102 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।
और अब शेयर बाजार के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन जुड़ चुके हैं मुंबई से बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार और गुड इवनिंग जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आज 774 अंक की बड़ी गिरावट आज सेंसेक्स में देखी गई है। क्या प्रमुख वजह आप मान रहे हैं इस गिरावट के पीछे? देखिए, आज का बाजार में बड़ा कारण गिरावट ये था कि अडानी ग्रुप कंपनीज पे एक इंटरनेशनल एजेंसी ने रिपोर्ट लिखा, एडनबर्ग उनका नाम है, और उन्होंने काफी बड़े आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, और काफी हद तक उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक्स एम्प्लॉयज अडानी ग्रुप के इंटरव्यू किए, उनके साथ काफी टाइम बिताया, और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। तो उससे मार्केट में बहुत पैनिक रिएक्शन आ गया। जैसे सभी को पता है कि अडानी एंटरप्राइजेज जो अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, वो कल से उनका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ओपन कर रही है 20,000 करोड़ के लिए। तो हालांकि कंपनी ने अभी पुष्टि की है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये रिपोर्ट बेसिकली मैलिशियस है, बट मार्केट में डेफिनेटली एक पैनिक रिएक्शन आ गया और आपने देखा कि अडानी का सारे ग्रुप के स्टॉक्स में भारी पिटाई हो गई। इससे मार्केट का सेंटिमेंट आज सुबह से काफी बुरी तरह से हिला। दूसरी वजह मार्केट को गिरने के लिए ये भी थी कि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो नॉर्मल वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और डेफिनेटली ये दोनों कारणों से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो आज का माहौल था वो बेसिकली शुरुआती सत्र से ही सेल का था। तो उसलिए आपने देखा कि निफ्टी, सेंसेक्स, सारी कंपनीज कैश सेगमेंट में भी काफी भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। तो ये मेन कारण थे कि यहाँ पे हमने देखा कि आज एक वाइड सेलिंग सेल ऑफ देखने को मिला। आने वाले दिनों में जब तक क्लैरिटी आएगी नहीं, तब तक मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप के कंपनीज में थोड़ा बहुत जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अनसर्टन रहने की अपेक्षा रही। Right. Avinash, to talk about the Sensex and the Nifty, the Sensex is, broadly in that range of 60 to 62,000 for quite some time now. Despite negative news off and on, it has maintained itself in that particular band. What do you think are the factors which are actually supporting the Sensex and the Nifty at these levels? See, I think, if you look at the Sensex and the Nifty, it is very index management. I mean, as of now, we all know that, stocks like Reliance, SDFC, L&T, the banks like Axis Bank, ICICI Bank, these are heavy index weights, and therefore, the markets are definitely, not, showing a significant drop as far as the Sensex is concerned. But if you look at the broader market, I think the broader market clearly depicts that beyond the 30 shares Sensex and the 50 shares Nifty, the mood in the market is little cautious ahead of the budget. And I think just looking at a broader index level may not actually give you the complete picture. So my sense is that, one has to look at the broader index and the broader market in particular to get a fair assessment of what is happening on the ground. So maybe the Sensex may range in a very close range of 60 to 62,000. But I think the internals definitely are not great. I think one clear, indication is that large companies like Asian Paints, D-Mart, or for that reason Colgate, which presented results today, have been significantly below market expectations, and earnings numbers have been very weak. So, if earnings growth is not going to be great in FY23, then I think obviously the Sensex will find it very difficult to sustain these levels. So I think broadly, one has to look at the broader market to be very honest to know what is actually happening on the ground. The Sensex is just a number which I think doesn't give any indication of the reality which is prevailing in the market. Yes. Yeah. And Avinash, to talk about, other aspects also, we have seen, kind of negative news come in, and some of the analysts and experts overseas have predicted that there's going to be some kind of a recession, and surely there is a major slowdown in Western economies. But people have now started talking about, and there have been reports that in the second half of the calendar year, 2023, there could be a major recession in the world. So, as experts like you often say that the market discounts such bad news, what is the exact position? Are people talking, are market participants, thinking and talking about these aspects as well, that from, say 3 or 4 months down the line, some kind of a major recession and slowdown is expected? Yeah, I think as far as recession or slowdown is concerned, it is very much visible in developed markets like US and Europe.
I think on the ground, things have not changed at all. In fact, recently, the federal government, the governor for US clearly indicated that inflation still continues to be high and interest rates are unlikely to come down significantly in 2023. So my sense is that, this will definitely impact even economies like India, because we do export a large part of goods and services to countries like Europe and US. And therefore, sectors like metals, IT, pharma exports, these are the companies, where one has to be a little cautious, because clearly demand recession is going to mean lower business for these companies. But on the other hand, it's going to be a proper normal kind of market for companies which are focused more on the domestic market. So I think if recession does come in US and Europe, I would believe that, companies which are focused more on these markets are going to obviously face a setback. As far as the Indian market is concerned, we still are a growing economy. We should be seeing GDP growth rates of at least 6.5% in the current year. And with, government finances in a pretty good shape, especially on the GST front, on the personal finance front, I would believe that, India doesn't have to bother much. But yes, on the export side, we would definitely face a problem, and that could obviously lead to a little bit of underperformance for those pocket of companies which are largely export focused. So I think the focus of the investors should be more on the domestic sector, where I think there's a lot of vibrancy and a lot of opportunity to grow. जी अविनाश जी, निफ्टी बैंक की अगर हम आज बात करें तो 1086 अंक की गिरावट है और 41,648 पर ये बंद हुआ है। आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखिए, 2.4% की गिरावट। और अगर हम पीएसयू निफ्टी की बात करें तो 3% की गिरावट। बैंकिंग सेक्टर में अब ये किस तरीके का आप ट्रेंड देख रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में क्या यही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा, या ये एक फौरी एक दौर है? ये मेरे ख्याल से देखिए, बैंक निफ्टी में आपने सही कहा कि पिछले 2 दिन से बहुत भारी बिकवाली हो चुकी है। लेकिन आपको ये बात भी समझना चाहिए कि पिछले 6-8 महीने में सरकारी बैंक्स कहिए या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहे, यहाँ पे बहुत भरपूर तेजी हो चुकी है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 17-18% है, उसका फायदा हमने देखा है कि सारे सरकारी बैंक, बड़े हो छोटे हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, यहाँ पे नंबर्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर बहुत ही दमदार दिसंबर क्वार्टर के लिए आए। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है। लेकिन फंडामेंटली अभी भी हम समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर काफी वेल पोजिशन्ड है। बहुत समय के बाद कॉर्पोरेट कैपेक्स का जो साइकिल है वो शुरू हो चुका है और उसका फायदा बैंकों को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनको थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना है वो तो अब कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब बैंक निफ्टी में आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस दिखता है, क्योंकि ये ज्यादातर एक स्पेकुलेटिव इंडेक्स है। फंडामेंटली मैं समझता हूँ कि अगले 6 से 12 महीने का जो व्यू है बैंकिंग के लिए अभी भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है वो रीजनेबली तरीके से बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली हाउसिंग फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, रिटेल फाइनेंस, ये सारा कुछ ऑब्वियसली हायर इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वॉलेटिलिटी तो आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, जो बेसिकली ये दर्शाता है कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की अपेक्षा है। Yeah. And Avinash, let's also talk about the macro picture, the big picture. I'm sure you'll agree that, the union budget is just a couple of days away. And this year, budget 2023 could probably do all that which the government wants to give to different classes of people, to business, to corporates. Because next year, 2024, it is going to be a vote on account, not a full-fledged budget. So maybe, they won't be able to come out with all those provisions. So as far as this government is concerned, this probably, year 2023 budget is a budget where the government can, go ahead and kind of dole out incentives to different sectors, economy, and the corporates. What, according to you, would be the big expectations from the budget so that the markets, sit up and take notice and, keep their upward movement? Yeah, I think you're right in mentioning that this is going to be a pre-election budget, because 2024 we are going to have general elections. And I think obviously in the year of general election, normally there is an interim budget, and only when the new government comes into formation, a new final budget is presented. But as far as this year's budget is concerned, I think it would going to be focusing again on the macro theme like infrastructure, capital goods, and basically focusing on sectors like housing, typically healthcare, as well as solar and hydrogen energy. So I would believe that this is going to be a budget where even the middle class can expect some small incentives. Typically, people are expecting the standard deduction or maybe the income tax slabs to slightly improve. So net in all, the government may not like to disappoint all the sections of the society this time. Yeah.
same time, it would not like to make it a populist budget because populism definitely will not be liked by the market. I think it should be a balanced budget with something for everybody in it. जी, बजट की बात हो रही है। बजट से कई उम्मीदें भी होती हैं, उद्योग जगत को भी होती है, आम जनता को तो होती ही होती है। आपने इंफ्रा की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की कि सरकार का फोकस रह सकता है इस क्षेत्र पर। तो इंफ्रा में भी कई सेगमेंट है, स्टील है, सीमेंट है। ऐसे में अगर सरकार इसको और आगे बढ़ाती है, जिस तरीके से रोड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो ऐसे में स्टील और सीमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस मिलता है तो सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो सीमेंट डेफिनेटली को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगले साल इलेक्शन है तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि काफी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे क्योंकि अगले साल जब गवर्नमेंट मैदान में उतरेगी तब वो चाहेगी कि काफी प्रोग्रेस ये सारे सेक्टर्स पे वो दिखाने की दमखम रखेगा। तो मेरे ख्याल से स्टील और सीमेंट ये दोनों जुड़े हुए हैं और डोमेस्टिक डिमांड अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, कैपिटल गुड्स की सेक्टर की बात करें तो काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन सीमेंट में मुझको लग रहा है कि ज्यादा तेजी की पॉसिबिलिटी, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस भी बढ़े हैं, कैपेसिटी भी तो काफी धीरे धीरे मार्केट में टच कर रही है। तो ये दोनों सेक्टर्स के लिए आने वाले समय शायद अच्छा होगा। मेरे ख्याल से निवेशकों को ये दोनों सेक्टर्स पे ध्यान जरूर देना चाहिए। जी, माना यही जा रहा है कि सरकार का फोकस रूरल डेवलपमेंट पर भी हो सकता है। बजट में काफी कुछ रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार घोषणाएं कर सकती है बजट में। तो ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर की आप क्या आगे आने वाले समय में संभावनाएं देखते हैं, खासतौर पर गांवों में जब हम खुशहाली की बात करते हैं तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गांव में और रूरल रिलेटेड जो थीम है, स्पेशली एग्री थीम है, वो इस बजट में भी काफी स्ट्रांग होगा। हालांकि देखिए, एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी को करीबन 20% ही कंट्रीब्यूट करता है। एफएमसीजी कंपनीज के लिए अच्छी बात है कि बहुत समय के बाद जो रॉ मटेरियल के खर्चे हैं वो काफी कम हो चुके हैं। पाम ऑयल का जो उनका मेन कॉस्ट होता है वो करीबन 25-30% पीक लेवल से अभी घट चुका है। प्लस रूरल डिमांड अभी बढ़ रही है। अंदाजा है कि पिछले 1.5-2 साल के बाद अभी रूरल मार्केट में थोड़ी सी चमक आ रही है। तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल डेफिनेटली कंजम्पशन रिलेटेड जो भी एफएमसीजी कंपनियां हैं वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी और यहाँ पे डेफिनेटली निवेश का मौका बनता है क्योंकि काफी समय के बाद ये अपटर्न शुरू हो चुका है। तो और वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से काफी रीजनेबल है। तो यहाँ पे एक निवेश का मौका जरूर बन सकता है। Yeah. Avinash, let's also talk about the automobile sector. After a long time in the past, 3 months, we have seen the entire automobile sector, including, two-wheelers, three-wheelers and passenger cars, have got back their pricing power and sales have improved a lot. Isn't that an early indicator or a lead indicator of shape of things to come that the economy is kind of fairly doing well? Yeah, I think absolutely right. I think, just to put your point into perspective, yesterday we saw the Maruti's, Suzuki numbers. These numbers have been significantly better. In fact, the company has not only improved its EBITDA margin, but it's reduced its raw material cost to revenue. Most importantly, on all parameters, Maruti Suzuki has done remarkably well. And I think that is because not only demand for cars has gone up, but commodity prices have come down. In fact, today, a very big surprise has come in from Tata Motors. Tata Motors has shown a very significantly big rise in its net profit compared to a very significant loss in the third quarter of last year. So I think this clearly points out that, companies are redefining their cost metrics. They are trying to obviously bring in a lot of operational, synergies and, efficiencies, and that is definitely playing out on these companies on their operational numbers. So whether it is a two-wheeler company, a passenger car company or a commercial vehicle truck company, all the segments are doing well, and that really portrays the fact that the economy is back into action. And I think that clearly shows that, this year, FY 23-24 should be another strong year for the automobile sector. जी, अविनाश जी, यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है, इसकी बजट से क्या उम्मीदें हैं और अगर वो उम्मीदें पूरी होती हैं तो इस सेक्टर में कितनी तेजी आप या कितना आगे और इसको बढ़ता हुआ देखते हैं आप? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 2 ब्रांचेज है। एक तो जो ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल है और दूसरा फिनटेक सेक्टर है। हमको लग रहा है दोनों सेक्टर्स में जो सेगमेंट्स है, फिनटेक एज वेल एज जो ट्रेडिशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है प्लस जो बैंक्स है, ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा सा इनको एक सहूलियत दे दी जाए।
प्लस काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाए जहां पे इनको अपना क्रेडिट ग्रोथ स्प्रेड करने में मदद मिलेगी। प्लस थोड़ा सा एसेट क्वालिटी, जैसे कि एनसीएलटी में हो रहा है कि प्रोजेक्ट्स बहुत ही धीमे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा प्रोसेस स्मूथ आउट होता है तो जो बैंकों का पैसा बैड एसेट्स में अटका हुआ है उसको भी लिक्विडेट करने में मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी सभी लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी अगर बढ़े तो उसका फायदा ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलेगा। और कहीं ना कहीं बैड बैंक का जो कॉन्स्टिट्यूशन करने की बातें प्रीवियस टाइम गवर्नमेंट ने की, उसका भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन इस बजट में हो जाए, तो उससे भी काफी फायदा बैंकों को हो जाएगा, जिससे उनको अपने एसेट लिक्विडेट करने में मदद मिलेगी। Yeah. And Avinash, let's discuss about the corporate results as well. We are into the result season now. The Q3 results are pouring in. How do you assess the Q3 results as satisfactory or below expectations or above expectations? Some of the sectors we have seen, biggies of the tech industry, IT firms doing fairly well. No, right. I think on a sectoral basis, IT has done much better than what the street expected. But I think you must understand that December is not a very busy quarter. The real, quarter which is important to watch out is the March quarter, when a lot of trade deals and new client wins are, recorded by these companies. But I think on a broader basis, automobiles, auto components, capital goods, real estate, typically building products, these are sectors where we can say that the performances of companies has been pretty good. But on the other hand, companies from the consumption sector, as I was telling you, companies like Colgate, Pidilite, D-Mart, Asian Paints, these large companies have shown very poor performances, and I think this is definitely not a good sign, because this means that demand has not increased and cost pressures have built up. So I think broadly, leaving along these sectors, I think the markets are definitely looking at those companies where the earnings trajectory is pretty strong and the demand potential is good. So you could add these sectors, maybe specialty chemicals and rural-based companies, where possibly the demand is, definitely inching upwards. Yeah. And Avinash, let's also talk about interest rates. You made a mention of them earlier as well. In the first week of February, we will again have the bi-monthly monetary policy of the Reserve Bank of India. What are your expectations in terms of, basis points? How many basis points hike or no hike at all? What do you expect? No, I think we still have inflation which is beyond the comfort level of the RBI. And I think unless and until we see a sustained reduction in inflation, I am not very confident and sure whether we could have a status quo in the RBI policy coming, in February. So my sense is that we should be ready for a 25 basis point increase, depending on the kind of inflation trajectory which we are seeing now. A 25 basis hike is definitely possible. So I think that is what the market is also factoring in. जी, एक और महत्वपूर्ण सेक्टर हाउसिंग या रियलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि बजट में कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है, कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो कि घर खरीदारों के लिए फायदेमंद हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा पॉकेट है जो गवर्नमेंट बहुत तेजी से उसको एनकरेज कर रही है, क्योंकि हाउसिंग अभी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी लोगों को इंडिया में मिल नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो कंसेशन अफोर्डेबल हाउसिंग को अभी मिल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले बजट में उसको शायद एक एक्सटेंशन मिले और रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा तेजी देने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वाला सेक्टर है, तो इस सेक्टर को भी लेके कहीं अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इस बजट में अनुमान है कि ये दोनों सेक्टर, रियल एस्टेट और अफोर्डेबल हाउसिंग, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे, ऐसा ही लग रहा है। और इसका फायदा मेरे ख्याल से पूरे मिडिल क्लास को मिलेगा, एफ्लुएंट क्लास को भी मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जी, और अब रुख करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.8% की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% चढ़ा और जापान का निकेई सूचकांक 0.4% लाभ में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों पर नजर डालें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% के नुकसान में चल रहा था, जबकि जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। Well, let's take a look at the American markets as well.
The S&P 500 and the Nasdaq indices ended marginally lower, while the Dow closed with gains yesterday. The US stocks ended mixed amid mixed earnings and a technical malfunction at the opening bell. The Dow Jones Industrial Average rose 0.3%, while the S&P 500 slipped 0.1%. The Nasdaq Composite Index fell 0.3%. A very brief comment, Avinash, on the international scenario. How do you see the international scenario, European and American markets panning out? Yeah, I think as far as the U.S. markets are concerned, I think this is also the earnings season there, and I think a lot of companies have been showing very volatile performances. In fact, on the employment front, there have been many companies like Google, Amazon, which have announced massive employment, job cuts. So this is definitely not a good sign and clearly shows that recovery is still a long way off. And to that extent, I believe the Dow or maybe the US markets will continue to be volatile and trade with a negative bias. European markets appear to be slightly better because earlier there were reports that there could be a lot of, scarcity of, gas. But, frankly, that situation is not that bad as everybody was thinking. But yes, on ground, I think it's at least a couple of quarters before the macros improve in Europe. Right. Let's take a look at the oil scenario as well. Oil today slipped, adding to a decline in the previous session as a rise in U.S. crude inventories and global recession worries edged out optimism for a demand recovery in China. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.40 per barrel, while the WTI crude was at $80.40 per barrel. और अब बात कीमती धातु की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज 190 रुपए गिरकर 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 500 रुपए टूटकर 68,040 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,942 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में चांदी भी गिरावट के साथ $23.50 प्रति औंस पर चल रही थी। अविनाश जी, सोने के बारे में आपसे एक बहुत ही संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों हम देख रहे हैं। आज हालांकि भले ही एमसीएक्स पे थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, लेकिन 56,000 के आसपास, 57,000 के आसपास पहुंच गया सोना। कहाँ जाता देख रहे हैं आप सोने की कीमतें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, सोने का भाव आने वाले 3 से 6 महीने में और भी बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि एक तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक जो है वो अभी सोना खरीद रहे हैं और बहुत समय के बाद सोने में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो अभी जो 55-56 हजार का जो लेवल सोने का चल रहा है, हमको लग रहा है कि 59-60 हजार कम से कम अगले 3 से 4 महीने में होने की अपेक्षा रहेगी। ज्यादातर ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट करेगी, क्योंकि इसका लोन टू वैल्यू रेशियो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा और काफी हद तक जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं गोल्ड फाइनेंस के, सोने का भाव देखने के बाद नए लोन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी गोल्ड फाइनेंस बिजनेस के लिए अच्छा दिन आने वाले हैं। 24 ईयर फॉर गोल्ड फाइनेंस। अविनाश जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And before we close, a quick look at the top stories. Domestic share indices witnessed losses of more than 1%. Sensex finishes near 60,200 level, while the Nifty settles below 17,900 points. At the forex market, the rupee appreciates 13 paise against the US dollar, and gold slips to trade near 56,800 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.